nuclear policy of India. So now in the news it will be like, if some country they will try to attack you, what you will do, what to your action will be related to the retaliation to that war, like not war exactly. If they will try to send some missiles and all, then what will be your retaliation? So we'll try to talk about that. So nuclear policy of India primary objective to achieve economic, political, social, scientific, technological development within a peaceful, very important word, peaceful and democratic framework. So when I will try to talk about defense technology, right, there I will talk about missiles. So there are two kind of missiles. One is called strategic missiles and one is called tactic missiles. So for strategic missiles, for example, Agni 5, it can destroy, like the range it have like a intercontinental ballistic missile. We'll talk about what is ballistic missile and all. So what I'm saying is intercontinental means from one continent to another continent you can try to target another continent. And if it is targeting to another continent, it will try to take away the entire city. Blast जो हवा पूरा गोटे सिटी को ही destroy कर दो. And जोटी गोटे सिटी वगैरह destroy हवा वाले chances ଅଛି एठी democracy. This has to be the order for that release or for the launch of that missile has to come from which department? Basically from the democratic, means from the neta public ଯାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆସିବା ଦରକାର, means from government the order has to come. But for tactic missiles, right, tactic defense weapons like छोट छोट मिसाइल, क्रूज मिसाइल वगैरह हला जोगुडा कि गोटे छोट पॉइंट को जाई डिस्ट्रॉय करबो, सेगुडा डायरेक्ट चाहिए आर्मी डिसीजन नहीं परिबो. बट जोरदी मु कहबी कि लाइक ballistic missile launch करियार अछि तो तमे देखि दिबो ना कि there are something in news or in movie like May Atal Hu, right, or May Hu Atal, something like that movie. So there was like they are targeting for missiles and all. Subhash Chandra Bose वाला सेठी गोटे एमती गोटे मूवी देखितली, सेथिरे सब पळै जो ना प्राइम मिनिस्टर कर लाइक चैम्बर वगैरह देखिबे, से माने कोन डिसाइड करछन्ती, से माने अटैक करिवे ना करिवेनी, लॉन्च करिवे ना करिवेनी. तो काहेकि प्राइम मिनिस्टर कथा आसी जेतले बैलिस्टिक मिसाइल आसी जोठी गोटे सिटी अफेक्ट होवार अछि, जोठी सिविलियंस मरिवे, करेक्ट नो. तो से टाइम रे तमे देखिबो ना कि एबे ईरान आउ इराक सेठी बेसी आंक विषय रे चर्चा ही हमनी कहा विषय माने तांगा आर्मी फास्ट कथा होची कि डिप्लोमेसी माने पॉलिटिशियन लेवल रे कोन होची कि से माने बिकॉज़ गोटे सिटी ऊपर तमे अटैक करिया को जाउछो जोठी सिविलियंस मानकर डेथ वगैरह आसीबो. तो we'll try to talk about from that perspective. So according to nuclear policy of India, what we are trying to do is our nuclear policy is very simple, that we are going for economical, political, social. So if you see this word, these both are related to our mains, right? UPSC ro mains re economical and social word ache. So the other thing, political, scientific and technological development, within this has to be done within what? Peaceful and democratic framework. That means we should not engage at the first. If someone will engage with us with missile attack or any other attack, then we don't know to what extent we will try to retaliate. You understood, right? जदि मु काहा को आको चापुडाटे मारिबिनी, किंतु जदि मते चापुडाटे जणे मारला, मु ता बेक काट देबी या गळा काट देबी या मु ताको टोटली उड़ेई देबी, से विषय मु निजे भी जानिनी. बेसिकली ता ऊपर मोर कोनोसी लाइक कोनोसी इंदी बाउंड नाही कि मु कोन करबी. यू अंडरस्टूड, राइट? फास्ट वार वाला पॉलिसी हम पाखरे नाही, किंतु जदि जणे आम सहित आको लागिला, देन आम को एक्सटेंड जाय कि आमे जाई युद्ध करिवु ता विषय आमे जानिनु. हां, एती किछि आमे एठी देखिबा कि जदि कि ओडे जदि से न्यूक्लियर वेपन वाला कंट्री ही नथिबा ताको ताठी तो आमे न्यूक्लियर वेपन प्रयोग करिवु. ये सब जिंस आसीबो न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया. ओके, लेट्स कंटिन्यू. बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ए क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट, मींस मिनिमम डिटरेंट हला बळिया आमे कोन करूचे ना, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग आमे गोटे ट्राई करूचे. डिटरेंट मींस डैमेज. ओके, नो फास्ट यूज, we are not going to use the nuclear weapon in the first stage. So no first use for nuclear weapons to be used only in retaliation against a nuclear attack on Indian territory or on Indian forces anywhere. जदि कोठी भी जदि न्यूक्लियर अटैक हैला इंडिया रो टेरिटरी हो या फिर इंडिया रो फोर्स ऊपर हो, then will try to retaliate, and to what extent will retaliate, that we don't know. So nuclear retaliation to a first strike will be massive, means ame भी जानिनु कि सेटा केते massive, right? So and designed to inflict unacceptable damage. फरक पड़ेनी से को रिलेटेड डैमेज होची, हमको सेगुडा किछि फरक पड़ेनी. जदि हम ऊपर फास्ट अटैक हला, देन आवर अटैक will be massive attack. Nuclear retaliatory attacks
to be authorized only by civilian and political. Why? I already told, because it is now going to involve different country रो या फिर different places रो citizen. जेहेतु citizen का ऊपर affect पड़िबो तो सेठी citizen ही decide करबे, एठी army decide करबे. मतलब see again polity, correct no? आर्मी को पॉलिटी बाछि कि सॉरी नॉर्मल लोक से माने आर्मी रो जो मेजर माने अछन तांकू नॉर्मल लोक बाछि कि लोकंकर कोनोसी प्रकार ट्रस्ट आर्मी ऊपर अछि कि लोकर ट्रस्ट का ऊपर अछि निज पॉलिटिशियन ऊपर. इन फ्यूचर जदी मु काली मो कंट्री काली अटैक करिवो दैट मींस अलग माने मो ऊपर अटैक करिवे तो मो ऊपर अटैक हबो कि नै आरो डिसीजन के नबो मु ही नेबी ना हां कि नै. तो मु माने किए बिकॉज मु वोटिंग बेले मु मोर पॉलिटिशियन को ठिया करिछि तो मो पाई डिसीजन के नबो मु पॉलिटिशियन नबो. दैट्स व्हाई whenever there will be nuclear retaliatory attacks that to be authorized only by civilian political leadership through the nuclear command authority. So for example strategical weapon, I already told there are two kinds, strategical and tactic. So any kind of strategical weapon where we consider ballistic missiles, nuclear weapon, these has the decision has to come from the civilian political. Next, non-use of nuclear weapon against non-nuclear weapon state. So जदि गोटे स्टेट जी आम ऊपर अटैक कर लेट सपोज भूटान अटैक कर देला किंतु कथा होची भूटान पाखरे न्यूक्लियर ही नहीं, न्यूक्लियर लाइक अटैक करिया पे ता पाखरे न्यूक्लियर बम ही नहीं, करेक्ट नो. then जदि न्यूक्लियर बम नहीं then we should not attack from through the nuclear attack. आमे nuclear attack करिया कथा नो. and already we saw we don't use fast use policy, right? We don't have, basically we have no fast use policy. That means we should not attack nuclear attack in the first hand. जदि के कला then our response will be fast. So continuance of strict control on export of nuclear and missile related material and technology. We will have strict controls कि आमे जो export करूछु nuclear related कहा को export करिवु कोन करबे सेटा आमो ऊपर, because we are so many. Hope that is clear, right? So participation of FMCT means fissile material cut off treaty negotiation continued moratorium on testing means there is a ban but not testing nuclear bomb. Okay, so ban on not testing nuclear bomb means you should not test nuclear bomb. This is already like we are participating in FMCT means fissile material cut off treaty negotiation. Note, the fissile material cut off treaty FMCT is a proposed international treaty to prohibit the further production of fissile material. What is fissile material? That you should already know at this stage, right? कि uranium 235 कि uranium 235 तमे भाई एनरिच करूछ एंड वेपन ग्रेड बनाउछ बुझि होउछि ना मींस मोर देन 90% तमे ट्राई करूछ वेपन ग्रेड बनाया पाई. सो टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ fissile material cap on uranium enrichment basically. So this is what we call fissile material cut off treaty कि भाई जाओनी से आडको कहीं ना समस्ते दिबे देन समस्ते कहबे कि हमें न्यूक्लियर बम बने कि रखिबो हमें न्यूक्लियर अटैक करिवो न्यूक्लियर मिसाइल वगैरह रखिदिबो, राइट? तो देन समस्ते लाइक सी तमे तम सिक्युरिटी पई बनाओ किंतु कथा होची अल्टीमेटली तम पाखरे रहिला ना जो मोमेंट रे तमे चाहेबो यूटिलाइज करले गोटे ध्वंस हबो, करेक्ट? तो से सब सिचुएशन को एडेवा पई सो व्हाट वी हैव इज fissile material that is called FMCT. So for nuclear weapons or other explosive devices, the treaty has not been negotiated and its terms remain to be defined according to the proposal by the United States. Fissile material includes high enriched uranium or plutonium, except plutonium that is over 80% plutonium 238. See, plutonium 238, is it fissile material? Fertile material, right? And fertile material pa amo kono issue nahi. So according to proposal of Russia, fissile material would be limited to weapons grade uranium, which is more than 90% of U-235, and for plutonium more than 90% of 239. Neither proposal would prohibit the production of fissile material for non-weapon purposes, including use in civil or naval nuclear reactors. So you understood, right? For nuclear reactors, how much we require? More than 20%, correct? No. So, but it should be less than 90%. That means the fissile material cut off treaty एमिति न कि तमे से माने कहउछन कि तमे यूरेनियम एनरिचमेंट करिवोनी, यूएसए कहउछि कि टोटली करिवोनी, बट रशिया कहउछि कि ना 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 एटलीस्ट जदि न्यूक्लियर रिएक्टर रे हमको दरकार फिजाइल मटेरियल देन ता पई तमे करिवु तो मिनिमम हमको 20% सपोर्ट को छाड़ो. सो इंडिया टू रिटेन ऑप्शन ऑफ रिटेलिएटिंग विथ न्यूक्लियर वेपन in the event of major attack against it with biological or chemical weapon. It is not only nuclear weapon हेले ही हमें nuclear weapon अटैक करिवो, जदि तमे biological or chemical weapon अटैक कलो
ताहले भी आमे कोथरे अटैक करिवु न्यूक्लियर अटैक करिवु किंतु आमे सेही देश ऊपर न्यूक्लियर अटैक करिवु जहा पाखरे न्यूक्लियर पावर अछि इज दैट क्लियर सी इन द बिगिनिंग वी सॉ नो फास्ट यूज बायोलॉजिकल वेपन कोड बायोलॉजिकल वायरस रिलेटेड हाँ ओके एंड केमिकल वेपन अगेन फॉर एग्जांपल डिफरेंट केमिकल तमे ट्राई करछो जोथरे की गोटे देश माने से गोटे थाए ना समस्त मास लगे बुलिया को पड़ुची जना पड़ला कि गोटे सिटी रे तमे एमिति गोटे केमिकल छाडी देलो जो केमिकलटा एते स्प्रेड हे गला जोथि कि समस्त को लाइक कि मास पिंधी बुलिया पड़ुची तो एई भलिया जदी रिलेटेड किछि वेपन जदी के छाडीला देन व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज वी विल ट्राई टू रिटेलिएट विथ न्यूक्लियर वेपन सो दीस आर द सी दैट्स व्हाट नो फास्ट यूज पॉलिसी if someone will try to attack us then our reaction will be massive we don't know till what extent we will try to react so the retaliation will be massive then next one is non use of nuclear like missiles or nuclear attack on non nuclear state कि जदि से कंट्री टा ही न्यूक्लियर कंट्री नुह बेसिकली से मानक पाखरे न्यूक्लियर पावर नाही देन तांको हमें न्यूक्लियर मिसाइल द्वारा कि न्यूक्लियर अटैक तो करिवो ही नाही हाँ आउ देन आमे को वे न्यूक्लियर अटैक करि परबो एमिति न कि जदि हम ऊपर न्यूक्लियर अटैक कला हाँ जदि कि निजे ताडू न्यूक्लियर अटैक कला देन तो आमे स्टार्ट कर दउ न्यूक्लियर अटैक खाली न्यूक्लियर अटैक न जदि तमे बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक भी कला थ्रू केमिकल वेपन then also we will try to retaliate with nuclear weapon so this continued commitment to goal of nuclear weapon free world so our commitment is again to have a nuclear weapon free world through global verifiable and non-discriminatory disarmament so basically non-discriminatory disarmament in the sense आमे कहा को एमिते माने किछि गोटे डिस्क्रिमिनेट करनु कि नाही नाही तमे न्यूक्लियर पावर हे जिवो तमको आमे करिवा को दबोनु एक्सवाइजेड आमे समस्त को लाइक दिस दैट इज व्हाट आवर मोटो राइट वसुदेव कुटुंबकम सो वी ट्राई टू ब्रिंग द अर्थ टू हैव ए पीस बट जोति बेंगे आम पाखरे एफएमसीडी अछि बट किन हां आम पाखरे निजर न्यूक्लियर ट्रीटी भी अछि सो न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया इज ऑल अबाउट दिस थिंग्स होप इट इज क्लियर nuclear policy of India. Okay. So, India conducted 2 nuclear tests. Pokhran 1, known as Smiling Buddha. Pokhran 1, that is known as Smiling Buddha, and when it was 1974. They tested a fission bomb. See, nuclear energy in the sense they try to test a fission bomb. And fission bomb, you already know U-239 wala concept, right? Next, Pokhran 2 with the code name Operation Shakti. Okay, and that happened during this Atal Bihari Vajpayee period, right? So it took place in 11th and 13th May 1998. Conducted multiple tests, including a fusion bomb. What a hydrogen bomb भी सेवाने सेठी टेस्ट कर देछनी. And सेटा केताले करी including fusion bomb means and a couple of fusion bomb. If hydrogen bomb केताले स्टार्ट होबो जेतले गोटे fusion bomb ही ताकू हेल्प करिवो ना. बुझियो ना बुझियोनी. हाँ तो खाली मो जदि खाली कहबी कि भाई गोटे हाइड्रोजन बम टे मु पकै देछि इज दैट पॉसिबल नो सर रिएक्शन ही हमनी करे नो हाइड्रोजन बम जदि तमे बने कि ताकू रिएक्शन आ पई हेले भाई सफिशिएंट अमाउंट रे एनर्जी दरकार कारण से एनर्जी कोड मिलियो जदि तमे गोटे फिजन बम टे ता सहित ही छाडी देबो जोटा कि कहउछो तमे एटम बम सो द एटम बम एंड हाइड्रोजन बम इज दैट क्लियर सी एटम बम जदि पइला माने से संगे संगे रिएक्ट कर जो देयर इज नो इशू बिकॉज़ हमको एटम बम रे दरकार कोन गोटे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन दैट्स इट बट हाइड्रोजन बम जे पर्यंत एटम बम एनर्जी न देछि हाइड्रोजन भाबिनियो जदि तमे दीटा मिसै कि पकेलो एटम बम पकेला और हाइड्रोजन बम पकेला भाई आउ तो तमे आउ किछि देखा भी जीवन तमो बिकॉज़ हाइड्रोजन बम विल बी मोर स्ट्रांगर देन एटम बम ट्रू बिकॉज़ हाइड्रोजन बम रो जति एनर्जी रिलीज होबो दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ एटम बम हंगी नहीं ओके so International Atomic Energy Agency that is called IAEA India has a site specific safeguard agreement with the International Atomic Energy Agency. Basically, what they will do, they will supervise surprise visit देवे to countries to check if everyone adhering to the Treaty of Uranium Enrichment to show reactors that use imported uranium. जो माने imported uranium को use करूछन for example India try करिवो import करिया पे uranium कोठो let's suppose talk about Iran तो ईरान रो जो import कला ताको enrichment केते मात्रा रे करूछि तो IAEA कोन करिवो से माने surprise visit करिवो to check that they are not going 90% more enrichment correct no 90% more enrichment माने से न्यूक्लियर बम तैयार करिया ट्राई करते which is wrong concept okay जोटा कि हमें कहू छे कि हमें गोटे ट्रीटी रे गले कि फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी रे बट हमें कहू छे कि नै नै हमें निजे भीतर हमें बम तैयार करियो ओके सो दिस इज व्हाई द IAEA policy as 2019 14 Indian nuclear reactor that use imported uranium are under safeguard of IAEA IAEA was established in 1957 and World Atoms for Peace organization within United Nations family to promote safe, secure and
peaceful uses of nuclear technology. Nuclear suppliers group is a 48 nation body. If you are not nuclear supplier group member, you cannot export nuclear technology. You understood what is nuclear supplier group? So this is the group which is ready to export nuclear technology to others. But if you are not a nuclear supply group, then you cannot export the nuclear technology. So how many members? 48 nation body which monitors and controls the export of materials of technology that can be used to create a nuclear weapon. That used to create nuclear weapon. So basically here they will try to control as well as monitor on what na export of materials of technology, materials or technology that can be used to create so the nuclear weapon ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ for example ଭାବିନିଅ ଇଣ୍ଡିଆର let's suppose India ଅଛି NSG ରେ and ଭାବିନିଅ ଭୁଟାନ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି then India try କଲେ ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ export କରିପାରିବ ଯଦି ସେ NSG ରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି India ହିଁ NSG ରେ ନାହିଁ then सी आउ कहि कोठु कहि परिबोनी कि नाही भाई सी एनएसजी माने मु कहूची कि एमिति न कि एनएसजी रे तमे सेति गुडाबो जेते तम बाहर न्यूक्लियर पावर दिबो ना मे बी तम बाहर थाई पारे न थाई पारे सो जदी तमे मेंबर अछो सो इट ब्रॉट इन 1974 इन रेस्पोंस टू इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुधा जो स्माइलिंग बुधा हेला जोटा 1974 रे तो कथाला कि फास्ट कथा होची कि अलगा को कंट्री बनेवा कथा न जदी गोटे कंट्री बनेला ताले ताको सपोर्ट किए कला बुझियो ना बुझियोनी जदि इंडिया 1974 रे बनै देला स्माइलिंग बुधारे से फास्ट पोखरान 1 टेस्ट करि नेला ताकू किए सपोर्ट कला तेनु से माने से कहउचंदी कि वी विल हैव ए एनएसजी ग्रुप वेयर देयर इज ए 48 नेशन बॉडी if you are not NSG member you cannot export nuclear technology that means जदि तमको nuclear technology तमे काको प्रोवाइड करिया को बाबा then तमको आगा फास्ट NSG रे रहया पड़ो so it is a multilateral export control regime it is not a formal organization it guidelines are not binding decisions including membership are made by consensus so the membership were made by consensus total membership are 48 supplier state admission of new members is done through the consensus जो थि कि चाइना अपोज करियो सोले नहीं इंडिया को हम रखै दबो India has been attempting formally joining it since over a decade, but India received a special waiver in 2008 from NSG to conduct nuclear commerce. Even though India has the backing of the majority of the group's member, China has been blocking its entry for India not being a signatory of Non-Proliferation Treaty that is called NPT. So let's talk about what is this NPT and all. Okay. ट्रिटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी जोटा कि इंडिया साइन करि नथिला जोथि पई कि जेतले इंडिया कहउछ कि भाई मते एलएसजी रे ऐड करो because I have nuclear energy I have nuclear technology if I will try to export that nuclear technology I will get more money correct no it is related to balance of payment economy तो कथा होची तमे एक्सपोर्ट सेतले करि परिबो जेतले तमे एनएसजी रो मेंबर हेतिबो नल तमे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी काहू सप्लाई करि परिबो नै देन न्यूक्लियर रिलेटेड फॉर एग्जांपल तमे गवेषणा कलो बहुत पैसा खर्च कलो बट तमे काहू सप्लाई करि परनो एक्सपोर्ट करि परनो से टेक्नोलॉजी देन फायदा कोन देन तमे सेतिरु पैसा भी इनकम करि परिबो बेसिकली तमे कमर्शियलाइज करि परिबो बट जेहेतु जो 48 टा मेंबर अछन जेहेतु इंडिया रो रिलेशन से मानो सहित भलो अछि करेक्ट नो जेहेतु इंडिया रो रिलेशन से मानो सहित भलो अछि मोस्ट ऑफ द मेंबर सहित तेनु इंडिया को गोटे से माने गोटे वेवर देले कि छाड़ करे कि ठीक अछि यू डू कंडक्ट न्यूक्लियर कमर्स कि न्यूक्लियर कमर्स रे किंतु तो एक्सपोर्ट वगैरह करि परिबो न हां काडू कोन आनिया को चाहू छु देन काउ कोन टिके लाइक तू तोर निजरा डेवलपमेंट करिया चाहू छु न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह बनाया चाहू छु ठीक अछि तू करने बट हां एक्सपोर्ट होबा पई हम सफिशिएंटली तते परमिशन दे परिबो न एंड हमकु किए मना करू छी ना चाइना मना करू छी व्हाई बिकॉज़ इंडिया विल साइन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ओके लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन of nuclear weapons. This opened for a signature in 1968. The treaty entered in force in 1970, monitored by IAEA. The treaty defines nuclear weapon states as those that have built and tested a nuclear explosive device before 1st January 1967. 1967 पूर्वरु जो माने न्यूक्लियर एनर्जी को टेस्ट करि सारि चंदी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करि सारि चंदी से माने कोन कहला ना न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स so 5 states are recognized by NPT those are called nuclear weapon states among them USA was there Russia UK China France ये हिची केबे 1967 इंडिया करिछि केबे 1974 वर्तमान मते को इंडिया 5 कंट्री आसीबो कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट रे आसीबोनी बिकॉज़ 1967 रे से माने डिफाइन करछन्ती 1967 पूर्वरु जे टेस्ट कर देछि से माने किए के ना यूएसए रशिया चाइना यूके एंड फ्रांस
Now it delegitimize proliferation, means production and transfer of nuclear weapons, fissile materials, and related technology by the non-nuclear weapon states, while the nuclear weapon states can continue to possess nuclear weapons. That means it is saying it is delegitimize, माने या सेमानको प्रश्रय दउनी कोन करिया बे ना तमे प्रोडक्शन करि परिबो ना तमे ट्रांसफर करि परिबो कोन ना न्यूक्लियर वेपन्स ना ही फिजाइल मेटेरियल. So this is what NPT and India have to sign it. तो जो माने न्यूक्लियर वेपन स्टेट नुह से मानन को आला कि भाई तमे साइन करो. नाउ देयर इज अ कांसेप्ट रिलेटेड टू पॉलिटी, अगेन सोवरेनिटी. इंडिया has, so India is sovereign, correct? No, that means India ऊपर के ही नुह होंगी नहीं. आम इच्छा हले आमे साइन करिवो, जदी इच्छा न आमे साइन करिवो, आमो के बाध्य करि परिबेनी कि तमे साइन करो बोले. सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी. सो इंडिया डिडंट साइन कि नाही आमे एनपीटी जो ट्रीटी तमे करू, ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन आमे साइन करिवो. दैट मीन्स आमे चाहू आमे फ्यूचर रे प्रोडक्शन करिवु, आमे फ्यूचर रे ट्रांसफर करिवु, ए सब जिंस आमे करिवु. सो सेति भाई इफ यू सी India didn't sign this. So non-nuclear weapon states agree never to acquire nuclear weapons, and the nuclear weapon states in exchange agree to share the benefits of peaceful nuclear technology. कि nuclear weapon states जो माने देले, फॉर एग्जांपल तुमको nuclear reactor बनेवार अछि, ठीक अछि. आमे जो nuclear weapon states रहले के ना यूएसए, रशिया, चाइना, यूके एंड फ्रांस, ए माने कहले ठीक अछि आमे तुमको टेक्नोलॉजी देबो, तुमे बनाओ nuclear reactor. बट हां किंतु तमे पोजेस करिवोनी ना ही तमे न्यूक्लियर बॉम्ब तैयारी करिवो. सो द ट्रीटी हैज फोर holdouts. Those are India, Pakistan, Israel, and North Korea. So there was Israel, there was Pakistan, there was India, and North Korea. They didn't sign it. So it is a biased treaty that divided the world into nuclear hubs and nuclear have-nots. So this treaty was considered to be a very biased treaty which will try to segregate the world into two equal hubs. Not exactly equal hubs, into two hubs. One is nuclear hub, where there are only 5 countries, and there are nuclear have-nots. So India had a need to demonstrate nuclear weapon capability in 1974 and 1978. One is related to Smiling Buddha, and the other one is related to Operation Shakti, right? Operation Shakti. So to its problematic neighbors, because already we had problematic neighbors. China already has nuclear. So how can we be peaceful without having nuclear energy, nuclear technology? Correct? No. That's why we thought like, okay, China already ଅଛି. China nuclear state, nuclear weapon state. Then ଯଦି କାଲି ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେବି, ତାହେଲେ କାଲି ଯଦି ଚାଇନା ମୋ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବ, ମୁଁ ଆଜି ସିଗ୍ନେଚର କରୁଛି କି ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି କରିବିନି. ବେସିକାଲି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମିସାଇଲ ବଗେରା ବନେଇ ବି ପାରିବିନି, जोटा कि मो पाइन थ्रेट, मो सिक्योरिटी पाइन थ्रेट. सो मु साइन ही करबिनी. सो being a this is non signatory of NPT is preventing India from entering into the NSC, non supply group. Is that clear? Okay, fine. So in between we select this one. So benefits of India if it enters NSG. Jodi NSG को India enter कला ताले benefit कौन हो? So member will increase India's access to state of the art technology, basically the advanced technology from the other members of the group. Access to the technology and being allowed to produce more nuclear equipment will give a boost to the Make in India program. Basically जदी NSG जो 48 member अछन से माने निज निज भितर आदान प्रदान करछन टेक्नोलॉजी रो. किंतु जदी तमे NSG रो ग्रुप रे नुह तमे कहा सहित कहा को तो एक एक्सपोर्ट कर परबेनी, प्लस तुमको भी केही एक्सपोर्ट करेबेनी. माने ए जो 48 टा मेंबर अछनी से माने तुमको किछि देबेनी, किंतु से माने निज निज भितर, बिकॉज़ ग्रुपिज्म, राइट? इन इकोनॉमी आल्सो आई ट्राई टू टेल यू, राइट, रिलेटेड टू ग्रुपिज्म. इन दैट ग्रुपिज्म डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड ऑल, जो थरे कि से माने ट्राई करबे निज निज भितर बहुत बढ़िया से बने की रखिया पे. तो एठी जदी एनएसजी रे तमे आसी गले, ए जो 48 जण अछनी से माने ताका भितर टेक्नोलॉजी शेयर करछनी, बट इंडिया को कोनोसी टेक्नोलॉजी मिलुनी. जदी मिली जदी इंडिया एनएसजी रो पार्ट है, देन इंडिया को भी टेक्नोलॉजी मिलियो, एडवांस टेक्नोलॉजी ऑन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स. तो जो थरे कि इंडिया ट्राई करबो तार न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज करिकि जोडा ता एक्सपोर्ट कल सॉरी इंपोर्ट कला जो नुवा नुवा टेक्नोलॉजी ताकू एनहांस करि परिबो. एनहांस करिकि भलरे प्रोडक्शन वगैरह करि परिबो न्यूक्लियर इक्विपमेंट, जो गुडा कि मेक इन इंडिया. बर्तन जहां तुमको दरकार तमे बाहर कोठु आनिबो. देन तमे जदी तुम पाखरे जदी टेक्नोलॉजी मिली गला, देन तमे सब निज कंट्री रे तयारी करो. दैट विल बूस्ट economic growth of our country. So the question was, what is the consequence of country becoming the member of nuclear supplier group? This is UPSC 2018. तो जदी consequences कौन हबो a country becoming member of nuclear supplier group? It will have access to latest and most efficient nuclear technology. True. जदी जणे nuclear supply group भितरे पसिला ताले ताको भितरे त आराम से मिली जिवो ना, सप्लाई हबो ना, इंडिया will get the access. True. This is true. It will automatically become a member of
the treaty on non-proliferation. by this is wrong because 1967 1 January पूर्वରୁ ଯୋଉମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର they are considered to be only the nuclear weapon state ହଁ କି ନାହିଁ otherwise ସେମାନଙ୍କୁ signature କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା so only one any doubt hope it is clear right